हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ा तबीयत खराब हो गया था फ्रेंड, इसलिए हम नहीं आ पाए, लेकिन हम बराबर लाएंगे अभी वीडियो। तो कैसे हैं आज आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका भी हेल्थ अच्छा रहे और हमारा भी अभी अच्छा है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम गारमेंट्स प्रोडक्शन यूनिट मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके विषय में हम बात करेंगे। कौन टीम कौन सा चाहिए, वो टीम में कौन कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप लोग। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड दिस वीडियो। तो अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में पूछिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। Managing a garment production unit. In today's global marketplace, labor wages and material costs are rising continuously. Buyers don't agree to receive FOB yes as the rate of production cost increase. Therefore, garment manufacturers strive to improve that their performance to controlling manufacturing cost without compromising on product quality and timely delivery. Manufacturers also struggle with various other issues on a day-to-day basis. Garments manufacturing take interactive in multiple dimensions to remain competitive and monitor their production activities. Some of those inactive include the following, which are briefly discussed in this. Building a strong team. Define role of responsibility of their employee. Using a production tracking and reporting system. Conducting two necessary interdepartmental meeting. Setting up systems to defining communication flow. Setting up SOP department and major activities. Setting up policies to retain employees and workers. Measuring process KPI and employee performance assessment. So this is more important. SOP. Upgrading technology. Every time upgrade to technology and SOP. Key personnel of garments factory. The run of business successfully, the management of the factory needs to build a strong team with manager, supervisor and other staff in a medium-sized factory. The key personnel include the following. First, pattern master sampling team. Third merchandising team. 4 marketing team. 5 controlling quality controller, production head and production team, fabric scoring and fabric store manager, inventory manager, production planner, machine maintenance team and electricity, HR, administration person, accounts, shipping and documentation person, and workers. The activities undertaken by key personnel of various departments have already been discussed. The number of staff members to be recruited in each department depends on the factory size and workers volume. The number of workers to be hired depends on the works volume, the number of sewing machines on the shop floor. For example, you need a skilled pattern master who knows
Manual pattern making can also draft pattern from given simple specifications. She must know have be great patterns, use markers and understand fabric and their properties, such fabric, grain, line, a waist cut. She must know how fix fit related issue a garment simple and can incorporate the wire comments on the fit samples and measurement changes required in pattern. This seems to be used the CM allowance required to various part of pattern. You can start with a small team which sold available bundle most of the responsibilities of running the factory. Department wise employee profile of small scale factory. So I have explained to how to manage प्रोडक्शन यूनिट। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि प्रोडक्शन यूनिट में, गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट में कौन कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, कौन कौन आदमी उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसका। तो आज का वीडियो यहीं तक फ्रेंड। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट में पूछिए आपको वीडियो कैसे लगा। और कमेंट से पूछिएगा तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है, हाँ आपको वीडियो कैसा लग रहा है और अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। तो आज तो यहाँ तक वीडियो हमारे देखने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।